Hi students, a very good evening to all of you. I am Professor Dr Anurag Agarwal and this is OSN Academy of English since 1998. Welcome students in the OSN family. I welcome all my UPSC, NET and other examination students of English here in this session. And yes, it is actually a new beginning now. After a lot of requests, today I have launched yet another new batch of UPSC 2024 and even many students are going to join for 2025 because it is a thumb rule that you have to cover your IES preparation with command much before you cover your UPSC preparations. So always remember the student Suva Snigdha, who has qualified in the first attempt under my guidance from OSN Academy. Her success story is only the treasure of following me blindly. That she followed everything, the study materials, the classes, the test series and answer writing panel, all timely and religiously. So आज जो हम session लेके आ रहे हैं, that is totally in pure English. But my dear students, the UGC NET students will be getting two batches, the bilingual batch as well as the pure English batch. But here I am going to teach you today a very important session, yet a simple session which many of you might have heard, might have studied from your BA Part 1. But what I'm going to teach you is my style of teaching so that you may be able to understand that how I teach, what is the concept important. How is the concept important for writing the UPSC examinations, for understanding the concepts of NET? Because if you don't have the concepts, it is very hard, technically very hard to come out with the right options when you have the four options in NET or PGT or TGT or any other MCQ type questions. And when it comes to UPSC examination, you have to nurture your mind, your subconscious mind, your blood, your veins should all speak about literature. हमें बच्चों literature में हो जाना है. हमें literature में से प्यार करना है. We have to fall in love with literature. Unless and until you will not fall in love with literature, you will not be able to mug up literature. Literature is not a thing to mug up. It is a thing to feel the emotions. And then what Wordsworth has said, emotions, a spontaneous flow of powerful feelings. So that spontaneity has to come in your mind. And how it will come? When you will study the best content, and that too the UPSC approach content, and that too the best which you can actually understand. और अगर आपको ये अच्छा लगे तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे कि सर की जो मेहनत है वो आप तक पहुंचे. तो बच्चों लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, यस और नो, वाई और एन. और अगर यस तो यस, आई एम मोटिवेटेड एंड आई एम गोइंग टू टीच यू द बेस्ट. सो सी, यहां पे आज हम क्लास लेने जा रहे हैं. यहाँ पे आज हम क्लास लेने जा रहे हैं पोइट्री की. दैट इज द इंट्रोडक्शन टू पोइट्री. जस्ट गिव मी द हार्ट्स, रेड हार्ट्स. आई एम रियली फॉन्ड ऑफ दोज लव हार्ट्स वेयर द स्टूडेंट्स से दैट यस आई लव OSN Academy's क्लासेस. फाइन. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पोइट्री. पोइट्री क्या है? व्हाट इज पोइट्री? पोइट्री स्टूडेंट्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इनर फीलिंग्स. I'm trying to teach you in a very जैसे एक बच्चे को पढ़ाया जाता है. मे भी आपको बहुत कुछ आता होगा, लेकिन आज इस सेशन तक अंत तक बने रहिएगा और ये बताइएगा कि हाँ सर ये सेशन आपको कैसा लगा और why students study with OSN Academy so that they may become the best as far as the intellectual property is concerned. My dear students, all of you, a very good evening to all of you. Rajesh, Pradhan, Jyoti Verma, Simran, all of you, a very heartiest good evening. So my dear students, हम आज पढ़ा रहे हैं आपको introduction to poetry. What is poetry? Poetry is an expression of inner feelings. It is of emotions and how
This expression of inner feelings, this expression of emotions is in the form of words. शब्दों के ही तो रूप में होता है. We express our emotions, we express our feelings. How? In the form of words, शब्दों के द्वारा. However, in spite of that, there have been so many critics who have actually expressed different opinions as per their different mindsets. You already know that there have been innumerable critics all over the world, and they might have written thousands of definitions of poetry. But everybody has a different mind, everybody has a different opinion. And the most famous definition of poetry we all know is by William Wordsworth. And what is that? Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings, recollected in ट्रैंक्वालिटी. ट्रैंक्वालिटी मतलब होता है शांति में. जब हम चीजों को रिकलेक्ट करते हैं आसानी से शांत जगह पे बैठ करके. सो दिस इज द डेफिनेशन बाय वर्ड्सवर्थ. मैथ्यू आर्नल्ड ने भी डिफाइन किया है. ग्रेट पोएट मैथ्यू आर्नल्ड, विक्टोरियन पोएट, ही हैज डिफाइंड पोइट्री. हाउ? Matthew Arnold defines poetry at bottom, a criticism of life. Are you able to understand? At bottom, a criticism of life. And he says that poetry, like culture, is unacknowledged legislator of mankind. अब आपको मैं बताऊं, Robert Browning actually asserts, like the newspaper correspondent, the poet records everything, but he does not only make a plain statement of facts, he gives his own commentary in each cases and draws his own conclusions. This was by Robert Browning. Students, because we are learning poetry, that is why the basics and the base definitions of poetry is to be understood. And we can say that Robert Browning has set up actually a standard, who has created values in life. Moreover, we can say in a general sense that poetry is the vivid feeling and conception which is clothed in harmonious language, generally written in meter. Fine. Could you understand, students? That is the base of poetry? Yes. I am sure you must have understood everything. Now, see what I am going to tell you is that what are the sources of poetry, dear? Sources. S-O-U-R, sources of poetry. And these things which I am teaching is all of great importance while you are understanding the base of your knowledge when you start for any examination. So the sources of poetry, अगर हम बात करें तो there are principal sources of poetry. Can anybody tell me, कितने बच्चे हमें बता सकते हैं कि sources of poetry are two? दो होते हैं, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा. Now, my dear students, I would like to know that who will be telling me these two names. I would be very happy if anybody can tell me that the principal sources of poetry is this or is that. Rams, good evening Rams. Laman Yadav, good evening. Shivani Desai, क्या लिखा है शिवानी ने? Browning dramatic monologue represents society. Yes. And Pradhan Bana, क्या लिखा है? Good evening Simran. Pradhan Bana, yes, correct. तो जितने बच्चे भी हैं फटाफट लाइव आ जाएं. अभी तक केवल ज्योति वर्मा ने एक लव का निशान भेजा है, लव इमोजी भेजा है. क्या बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा है? आर यू लविंग इट? इफ यू आर लाइकिंग दिस सेशन, डू जस्ट सेंड मी इमोजी so that I may feel that yes, बच्चों को ये आज का सेशन अच्छा लग रहा है. It is for you students and it would actually give me happiness that yes, you are liking the session. Correct. राजेश ने डबल लव दिया है. थैंक यू राजेश. हम इंतजार कर रहे हैं बच्चों आपका.
ये दो आपको बताना है. आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू यू. चलिए बताइए. चलिए, आप नहीं बता पा रहे, मैं बताता हूं. क्या आंसर आया? इमोशंस एंड इमिटेशन. शिवानी देसाई ने लिखा है. नहीं बेटा, इमोशंस एंड इमिटेशन नहीं है. आगे आपको मैं बताता हूं. इट इज फैंसी एंड इमेजिनेशन. FANCY और ये है इमेजिनेशन. द टू प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ पोइट्री आर fancy and imagination, and both the terms, my dear students, are interrelated. But in spite of it that it is interrelated, but it has a slight difference. Fancy is originally synonymous with imagination and fantasy. It means the faculty of forming in the mind the representations, things not present in the actual form. It is reserved for its, you can say, more arbitrary, insubstantial, decorative and whimsical manifestations. आपने पढ़ा होगा क्रिटिसिज्म में, लिटरेरी थ्योरी में. हमने कोलरिज जब पढ़ाते हैं तो हम यूजीसी नेट के बच्चों को पढ़ाते हैं अपने क्लास में द डिफरेंस बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन. एंड दिस क्वेश्चन comes in the UGC NET exam also, and the difference of fancy and imagination is also very much required for the UPSC candidates. और जो भी बच्चे UPSC के देख रहे हैं उनको मैं फिर से बता दूं that do join the new 2024 batch which has just opened today. You can check out at the application of OSN Academy the study materials, the classes, the test series and answer writing. And congratulations to my student Suva Snigdha, who has qualified under my guidance in the first attempt. You can see all these details in the application as well as in my YouTube channel. Thank you Sakshi for this love sign, and Rems for your love and affection. Thank you. तो जितने बच्चों को भी अच्छा लग रहा है, they should subscribe it, they should like it, and they should also give this link to your other colleagues and friends too. चलिए आगे बढ़ते हैं. इमेजिनेशन इज डिफाइंड बाय कोलरिज एज, आपको पता होगा उन्होंने लिखा है, कोलरिज ने लिखा है, इट डिसॉल्व्स, इट डिफ्यूजेस, इट डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट. मैं आपके लिए लिख सकता हूं यहां पे, देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं. इमेजिनेशन इज डिफाइंड बाय कोलरिज. इमेजिनेशन इज डिफाइंड बाय कोलरिज एज इट डिसॉल्व्स, it dissolves, it diffuses and dissipates. हमारी स्टूडेंट एक ज्योति वर्मा है, लाइव है हमारे साथ. और यस ज्योति, आपने हमारा यूपीएससी का बैच ज्वाइन किया है. तो जो भी यूपीएससी के बच्चे हमें देख रहे हैं इस समय, मैं चाहूँगा कि ज्योति वर्मा 2 लाइन ज़रूर से लिखें कि उनको हमारी क्लासेस और हमारा जो स्टडी मटेरियल है उनको कैसा लगा. ज्योति वर्मा 2 शब्दों में या 2 लाइन में बच्चों को ज़रूर बताइएगा यहीं पे. हमने आपको बताया कि कोलरिज ने कहा है इट डिसॉल्व्स, इट डिफ्यूजेस एंड इट डिसिपेट्स. एंड व्हाई इन ऑल दीज थिंग्स in order to recreate. Yes, in order to recreate. It struggles to idealize and unity. It is essentially vital. ये बहुत important है. Fine. Now, subjects of poetry. हाँ, subjects of poetry देखिए हम आपको बताते हैं. इसके बाद एक हेडिंग आनी चाहिए आपको. क्या क्या हमने पढ़ाया अभी तक? आपको डेफिनेशन ऑफ पोइट्री पढ़ाया, प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ पोइट्री पढ़ाया. अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सब्जेक्ट्स ऑफ पोइट्री. फाइन.
जो बच्चे भी लाइव है कुछ पूछना चाहें, दे आर मोस्ट वेलकम। कोई भी क्वेश्चन अपने लिटरेचर से जो आपका कनेक्शन है, चाहे वो किसी भी कोर्स का हो, आप पूछ सकते हैं। सी, एज फार एज द सब्जेक्ट्स ऑफ पोइट्री इज कंसर्न, पोइट्री with the exception of satire deals with grandness, deals with the terrible also. अगर आप टेनिसन की पोइट्री देखें तो he has dealt with the terrible, the red and claw, the red and tooth, and also deals with the beautiful, but seldom with actually the mean, MEAN, seldom with the mean. इट्स प्रिंसिपल क्या है? इसका जो प्रिंसिपल है पोइट्री का वो क्या है? इट्स प्रिंसिपल इज एलिवेशन। और ये बात भी सच है, इट इज ट्रू दैट इन ट्रेजेडी ऑफ नैरेटिव कैरेक्टर्स एंड इमेजेस ऑफ द लोएस्ट क्रिटिक आर समटाइम्स एडमिटेड, बट फॉर द पर्पसेस ऑफ कंट्रास्ट ओनली, कंट्रास्ट समझते हैं ना, एक विरोधाभास, so they are for the purpose of showing you the contrast or to actually point a moral. और ये बात भी सच है कि लैंग्वेज की पोइट्री अगर हम बात करें, लैंग्वेज ऑफ पोइट्री, ज्योति वर्मा जी ने लिखा है, जो हमारी यूपीएससी की एस्पिरेंट है, अभी नया ज्वाइन किया है। सर, योर स्टडी मटेरियल इज अमेजिंग एंड योर क्लास इज फैबुलस. You make understand every topic very clearly. So I think ज्योति वर्मा ने एक बहुत ही जेन्युइन आपको एक कमेंट दिया है, एक रिव्यू दिया है बच्चों के लिए, और इन्होंने शायद अभी 5-6 दिन पहले ही ज्वाइन किया, और ये मेरी पहली बार इनसे बातचीत हुई है बाई चांस कि ये लाइव हैं, और शी इज़ माई न्यू स्टूडेंट एंड आई थिंक ज्योति, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शी इज़ फ्रॉम रांची, शी हैज ज्वाइन फ्रॉम रांची। तो जो भी यूपीएससी के बच्चे हैं, नेट के बच्चे हैं, बिल्कुल भी परवाह छोड़ दें कि आपको क्या मिलेगा। यू विल एक्चुअली गेट द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एंड माय एक्सपीरियंस ऑफ 25 इयर्स ऑफ टीचिंग एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक 25 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आपको करियर बनाना है। ये बात सच है या गलत है? येस और नो? अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो कविता में, इन पोइट्री, द लैंग्वेज, except when we intend to degrade, should not be technical, should not be colloquial, because the sounds which we hear on common occasions do not usually make strong impressions or convey some delightful messages or images. बल्कि जो शब्द होते हैं, while words जो हम बोल रहे हैं, to which we are newly strangers, whenever they are occurring, students, they draw that attention to themselves which they should convey to the things. So that is called the language of poetry. Fine. So okay, yes Jyoti, thank you Sakshi, thank you Sakshi for your love for OSN Academy. अब देखिए, यहाँ पे एक बात आती है कि जब हम पोइट्री पढ़ रहे होते हैं तो देर आर सो मेनी थिंग्स विच हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स लिरिक। अब हम यहाँ पे बेस लेक्चर आज क्यों ले रहे हैं? This base lecture of poetry is for those students who actually want to know how to start and how to understand the basic concepts of poetry, drama, fiction, non-fiction, or the UPSC syllabus, where you have to understand, because UPSC maybe there is so much of poetry and the answers has to be written. So unless and until your concepts are not clear, how will you write good answers? So that is why every student can enjoy this lecture. In spite of that, you might be knowing so many things. लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आज का जो ज्ञान है वो कहीं न कहीं आपको जीवन में ज़रूर मदद करने वाला है, इस बात की मेरी गारंटी है।
So a lyric poem is basically a relatively short poem, non-narrative poem, in which a single speaker is presenting something of a state of mind, which may be an emotional state also. Lyric poetry, students, uses some of the elements of song, and for Greek writers, the lyric was actually a song which was accompanied by the lyre. ग्रीक वालों के लिए एक लिरिक जो होती थी वो एक प्रकार की गीत होती थी जिसमें लायर का इस्तेमाल भी होता था. ठीक है, अब इसके अंदर एक सब कैटेगरी भी हम बना सकते हैं ऑफ द लिरिक. दे कैन बी ओड, यू कैन से, a sonnet you can say, and even dramatic monologue. You can say ode, elegy, sonnet, dramatic monologue, and even there are so many occasional poetries. अगर हम मॉडर्न यूसेज की बात करें, मॉडर्न यूसेज में, तो एलिजी क्या है स्टूडेंट्स? एलिजी इज बेसिकली अ फॉर्मल लेमेंट. एक फॉर्मल, जैसे हम फॉर्मल विजिट देने जाते हैं, फॉर्मल हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, तो एलिजी का मतलब होता है कि हमें आंसू बहाना है, हम दुखी हैं, बट इन अ वेरी फॉर्मल वे. फॉर whom? फॉर द डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. सो ये इनफॉर्मल लेमेंट नहीं है, ये एक फॉर्मल लेमेंट है. जब किसी एक पर्सन की डेथ होती है और हमें अपना वहाँ पे कंडोलेंस दिखाना है, सो दैट इज सपोज टू बी अ फॉर्मल लेमेंट फॉर द डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. And the term elegy is also used for truly meditations, often on questions death, like Gray's elegy written in a country churchyard. So this is what in short I can tell you. Now we come to ode. Can anybody tell me, students, what is an ode? कोई बता सकता है कि ode क्या है? कोई बता सकता है मुझे ओड क्या है बच्चों? ओड, ये देखिए, ओड भी एक लॉन्ग लिरिक पोएम है. लिरिक मैंने आपको बता दिया. ओड भी क्या है? इट इज अ लॉन्ग लिरिक पोएम विद अ सीरियस सब्जेक्ट. फर्क क्या आ गया यहां पे? serious subject, written in an elevated style. And a good example of this ode is Wordsworth ने एक ode लिखा है, Hymn to Duty. Hymn to Duty by William Wordsworth, and ode on a Grecian urn. Ode on a Grecian urn by Keats. Yes, old lyric poem written in elevated style. सचेंद्र पाल ने सही लिखा है, नमन यादव ने long lyric poem. बट उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है बताना, इन अ एलिवेटेड स्टाइल इट हैज़ अ सीरियस सब्जेक्ट लाइक हिम टू ड्यूटी, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न. आपने ये दोनों पोएम को ज़रूर से पढ़ा होगा, एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट्स एलिवेटेड फॉर्म एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बोथ दिस पोएम्स इज एक्चुअली सीरियस. नाउ वी कम टू sonnet. The sonnet actually, students, was originally a love poem. शुरुआत में इसको एक प्यार का गीत कहते थे. जिसको भी प्यार है वो सॉनेट लिखता था. अगर आप शुरू में चले जाइए, अलेक्जेंडर बार्कले, जहाँ से थॉमस व्याथ, जहाँ से भी ये शुरू हुआ है, आप देखेंगे that the people who are writing poems, they are just love emotions for their beloved. आप लोगों में से कितने लोग वैसी वर्षा अपने बिलवेड या अपने बॉयफ्रेंड या बिलवेड के लिए लव पोएम लिख चुके हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन सच लव पोएम्स लाइक अ सोनेट फॉर योर लव वंस? जिसने भी लिखा है एक बार थम्स अप करके ज़रूर बताएगा कि हाँ सर हमने लिखा है. फिर हम पूछेंगे कि कौन सी वो लाइन है जो आपने लिखा है. तो थोड़ा सा ह्यूमर भी ज़रूरी है. तो अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो प्यार बहुत ज़रूरी है. एम आई राइट?
क्या ये बात सही है कि अगर हम लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो हमारे ज़िंदगी में प्यार की बहुत आवश्यकता है, उसकी ज़रूरत है, क्योंकि साहित्य ही अपने आप में एक प्यार है और साहित्य बिना प्यार के आप उसको जी नहीं सकते। एम आई राइट? तो ज़रूर से आप आंसर दीजिएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। एंड येस, आई हैड ऑल्सो फॉलन इन लव समटाइम्स इन माई लाइफ एंड आई हैव रिटन सम लव पोइट्री फॉर माई somebody special. Fine. So the sonnet was actually a love poem originally which dealt with the lover's sufferings. लवर जो भी होता है उसको तो जीवन में केवल सफ़र ही करना है, उसके पास बहुत सारी होप्स होती हैं, बहुत सारी एस्पिरेशंस होते हैं, लेकिन ज़िंदगी में आपने देखा होगा कि जितने भी लवर्स होते हैं उनको सफ़र तो करना ही करना है। ये भगवान ने उनको एक प्रसाद रूपी एक गिफ्ट दिया है मुफ्त में कि इफ़ यू आर लविंग समबडी यू हैव टू सफ़र। अब वो सफरिंग किस लेवल तक जाएगी ये आप या गॉड जानता है। आप हमारे इस स्टेटमेंट से कितना रूबरू रखते हैं थम्स अप करके ज़रूर बताइएगा। एंड यस, द सोनेट uses a single stanza, usually 14 lines, ये आपको सभी को पता है, usually 14 lines and an intricate rhyme pattern. Many poets have written a series of sonnets linked by the same theme. अगर एक थीम है, रिलीजियस थीम है तो रिलीजियस थीम चल रही है, लव थीम है तो लव थीम चल रही है, सो सेम थीम में रन करती है। सो कॉल्ड कहते हैं सोनेट साइकिल्स which actually show the different stages of a love relationship. अभी लव एकदम परिपक्व नहीं हुआ है तो उस समय की पोएम, फिर जो लवर है वो बिलीवर से करीब आया उस समय की पोएम, फिर वो एक हो गए उस समय की पोएम, फिर वो अलग हो गए तो वो जो तड़प थी, वो जो एगनी थी, वो जो पेन था, वो जो सफरिंग थी, वो एक अलग हो गया। सो देयर आर सीरीज एंड स्टेजेस ऑफ अ लव रिलेशनशिप एंड दैट इज एक्चुअली द साइकिल ऑफ सोनेट्स। अच्छा साक्षी, दैट इज सो गुड दैट आपको मैं बता दूं कि since my childhood I have been a poet and I have also written many poems which used to publish in the daily newspapers when I was a student like you in the University of Allahabad. So I also have that, poetic sense of mind and temperament. Fine. Now, apart from lyric, ode and sonnet, now comes the dramatic monologue of Browning. As far as dramatic monologue is concerned, a speaker who is actually explicitly someone other than the author makes a speech to the silent listener. Listener जो है silent होता है in a specific situation, and that too at a very critical moment. Without intending to do so, the speaker reveals some aspects of his temperament and character. अगर आप ब्राउनिंग में देखें, माई लास्ट डचेस में देखें, द ड्यूक इज शोइंग द पिक्चर ऑफ द लास्ट वाइफ टू द एमिसरी फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव न्यू वाइफ एंड रिवील्स हिज एक्सेसिव, घमंड करके बता रहा है अपने पोजीशन में, एंड हिज जेलस टेम्परामेंट। और आपको याद होगा वो कहता है देन ऑल द स्माइल्स स्टॉप टुगेदर। दिस वॉज एक्चुअली सिम्बॉलिक। हमने मार दिया या मर गई वो नहीं बता रहा है। देन ऑल द स्माइल्स स्टॉप टुगेदर। ओकेजनल पोइट्री इज रिटन फॉर अ स्पेसिफिक ओकेजन, मे बी अ वेडिंग, द रिटर्न ऑफ अ किंग फ्रॉम सम एक्साइल or a death. So students, these are the paraphernalia, these are the parts of the entire aspects. इसके साथ बहुत कुछ और भी पढ़ने वाला है बच्चों। आपको अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से एक बार थम्स अप करके बताएं और कहें कि सर हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, और आप इसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर कहीं आप थक रहे हों तो मैं इस सेशन को दोबारा ले लूं या सेकंड टाइम ले लूं, इसका सेकंड पार्ट ले लूं। आज का रख दूं सेशन 1, पोइट्री सेशन 2, क्योंकि कॉन्टिन्यूस और इतनी एनर्जी से पढ़ाने से
थकान तो लगी आती है। तो चलिए इसके बाद एक एक थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम लोग, जिसका नाम है नैरेटिव पोइट्री। कुछ बच्चे बता पाएंगे कि व्हाट इज नैरेटिव पोइट्री? चलिए नमन, साक्षी, नमन, थैंक यू। आपको अच्छा लग रहा है तो मैंने अपने अंदर थोड़ी और एनर्जी ले आया कि बच्चों को अच्छा लग रहा है, तो चलिए थोड़ा सा और टाइम हम लोग देते हैं। नैरेटिव पोइट्री क्या होता है? नैरेटिव पोइट्री, थैंक यू साक्षी, थैंक यू रेम्स। Narrative poetry gives a verbal representation, gives a verbal representation of a sequence of connected events. सुचित्रा जेना, प्रणाम प्रणाम सुचित्रा, थैंक यू सुचित्रा। और सुचित्रा, मुझे ऐसा याद आता है कि आपने कुछ हफ्ते पहले, शायद आप वही सुचित्रा हैं जिन्होंने हमें मैसेज किया था दैट सर आई वांट टू ज्वाइन योर प्योर इंग्लिश बैच। प्रणाम विद्या पोपट, आपका इमोजी क्या है? आई एम वेरी वीक एट इमोजीज। अगर कोई नई इमोजी है तो शायद मैं समझ नहीं पाता हूँ। तो ये पिंक रंग की इमोजी का मीनिंग क्या है? अच्छा, आपने हाय किया है। हाय विद्या, हाय। जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, वो थोड़ा सा इमोजीज में वीक होते हैं, ये शायद आपको भी पता होगा। ओके सुचित्रा, हेलो विद्या। आप कहाँ से हैं विद्या? यू बिलोंग टू विच सिटी? So narrative poetry actually gives a verbal representation of a sequence of connected events. Yes, महाराष्ट्र से हैं आप। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे महाराष्ट्र सेट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो क्वालिफाई हो चुके हैं। अब महाराष्ट्र सेट के जो नए बच्चे हैं, वो नेट जो दिसंबर आने वाला है और जो सेट अगली बार होगा उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर चुके हैं। बुल्डाना, ओके बुल्डाना। I have few students in Buldana. I don't remember the names, but I have in Buldana. So this narrative poetry actually provide characters through a plot. जो narrative poetry है ना, this provide characters through a plot, and it is always told by a narrator. कौन बताता है? narrative poetry का मतलब है narrator. It is always told by a narrator, and narrative poems might tell of a love story, the story of a father, the story of a father and a son, or the deeds of any big hero or deeds of any heroine. But subcategories of narrative poetry are epic, mock epic or ballad. Epic, mock epic, ballad. These are the subcategories. SC मतलब subcategories. ठीक है। अच्छा नमन, आप उत्तर प्रदेश से हैं? ओके, लखनऊ से तो नहीं है? क्योंकि मैं लखनऊ से हूं, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हूं। एपिक क्या होता है? एपिक यूजुअली ऑपरेट ऑन अ लार्जर स्केल, चाहे वो लेंथ हो चाहे वो टॉपिक हो। आपने पैराडाइज लॉस्ट देखा ही है। बोथ इन लेंथ एंड टॉपिक, सच एज द फाउंडिंग ऑफ अ नेशन or a beginning of a world history, they tend to use an elevated style like Paradise Lost. Supernatural being a part in that situation.
But if we talk about the mock epic makes use of the epic conventions like the elevated style and the assumptions, and that the topic is of importance. Mock epic में जैसे आपने देखा होगा रेप ऑफ द लॉक, it deals with completely insignificant, occurrences, as we have seen the Belinda's bathroom, the Belinda's humor in the rape of the lock. The famous example is Pope's rape of the lock, which tells the story of a young lady whose suitor secretly cuts off a lock of the hair while she is sleeping. Now it comes to ballad. A ballad is actually a song. It is originally transmitted orally. It tells a story. It is an important form of folk poetry which was adapted for the literary uses from the 16th century onwards. So this is all about the narrative poetry and the three things: epic, mock epic and ballad. अच्छा, आजमगढ़ से हैं नमन आप? आजमगढ़ के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो टीजीटी पीजीटी नेट क्वालिफाई करके लेक्चरर्स बन चुके हैं. एक बच्चे का नाम मुझे याद है, नमन, शायद आप जानते भी हों, वैभव फ्रॉम आजमगढ़. ही हैज़ बीन माई स्टूडेंट and past I think 3-4 years he's a lecturer now in government. आपके शहर का ही है. तो बच्चों, ये आपको सेशन कैसा लगा? और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिंपल सा सरल सा सेशन सभी बेसिक्स से जो बच्चे स्टार्ट करते हैं उनको बहुत अच्छा लगा होगा. चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा. और कोई भी चीज़ हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, देख लीजिएगा. ऐप को डाउनलोड ज़रूर करिएगा. जो भी बच्चे करियर ओरिएंटेड हैं एक बार OSN एकेडमी का ऐप डाउनलोड ज़रूर करेंगे. प्लस जाने से पहले UGC नेट के स्टडी मटेरियल आप देख लें, शायद आपने देखा भी होगा. जो नए बच्चे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा स्पेशल, ये देखिए 3 बुक्स हैं टेस्ट सीरीज़ की, 1, 2 and 3. These are the 3 volume of special test series especially for net set and top level examination of MCQs. It can be used for PGT and all the level examination PGT and above. Moreover, students, जिन बच्चों को एक्सेल करना है, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 30+ questions in the last net examination came only from this crash course book. It is an amazing book actually, which is written day wise and in a order which you will be amazed. तो ये किताब ऐसी है कि ये कभी भी आप ले सकते हैं. You have to just WhatsApp us and take this book for yourself to command literature. And yes, UPSC के बच्चों ज़रूर से आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दें. एंड जो बच्चे किसी भी वजह से UPSC की क्लास नहीं ले सकते हैं, it is advisable to take the study material of UPSC or even the test series and answer writing. Yes, don't miss the test series and answer writing of UPSC 2023, even 2024. So have a good day, have a good evening today, and जैसा होगा दिए गए WhatsApp नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं. You will be given all the help. Thank you students. Take care.